So you have done your graduation in commerce. Yes, sir. How will you use the knowledge of the commerce in the administration? So in the administration, firstly, it will help me in budgeting my plans. Secondly, it will help in cost benefit analysis, and also in the analysis of what are the future options I have, and in choosing the best options as per the cost benefit analysis. Yes, sir. Okay, so you told me about budgeting. Yes, sir. How many different types of budgeting we have? So there are fixed budgeting, there is flexible budgeting, there is zero-based budgeting, and so there are others as well. I can recall these three. Okay. What is the difference between performance budgeting and outcome budgeting? So I cannot clearly make out the difference. But when we say performance budgeting, I think we analyze it as per the goals we have set, whether we have achieved or not. And in terms of outcome budgeting, it also considers the qualitative aspect or the vision aspect regarding the objectives that we wanted to achieve by using the operational goals, whether we have achieved or not. So. Okay. Can you give the example, one example where you can explain that this thing we will do in performance budgeting and what exactly we will do in outcome budgeting? So, for example, if we take a sales target and if we achieve it, then it will come under the performance budgeting aspect. But if we increase the market size or the main goal, which is by increasing scales we are capturing the market, I think that is outcome budgeting by achieving. Okay, fine. Okay, Amita, so are you following the recent developments in the taxation? So the new income tax bill, sir. Yeah, and there are other and changes. Other, yes. In the budget, sir. Budget, maybe there is a news about Google tax these days. Yes, sir. Tariff wars going on. Yes, sir. Yes, Manav, so can you please explain me about Google tax? What is Google tax and why we are removing it now? So the Google tax was levied as an equalization tax, so that there is uniformity in taxation and prevent the evasion of tax by the digital companies which do not have a physical base in India. So I can recall this. Fine, but why we are talking about removing it now? So maybe it relates to providing ease of doing business as well as bringing in more technology bases in India, so that. Okay. Is it related to some reciprocal tariff related issue? So I'm not sure of that, if Okay. it is related to that. Fine. Yes, sir. Recently there are some news about SEBI changing the FPI disclosure related norms. Yes, sir. So can you please tell me about this issue? So the SEBI has increased the threshold for disclosure of assets under management by the FPIs from 25,000 to 50,000 crore. Because the volume of transactions have increased from the financial year 2022 to 24, therefore this threshold is increased. What will be the benefit of this increase? So it will encourage more, bringing in more investments into India,
and provide a relaxation to the FPIs to increase their investment, because disclosure norms will provide a relief to them so that they can invest freely. Okay, fine. Can you tell me some provisions related to corporate governance in the Companies Act? So corporate governance refers to the rules, procedures that are applied for the welfare maximization of the stakeholders, and certain rules are firstly related to the provision of the independent director, that 1/3 of the board of directors should be independent. Secondly, one women director in every board. Thirdly, sir, one small shareholder director, which is there. There is also a provision related to appointment of auditors, external auditors, sir. So I can recall these provisions. Okay. You would have heard about CAG? Yes, sir. Okay. Controller and Auditor. Controller and Auditor General. Which article, under which article of the Constitution is it mentioned? So Article 148 to 151 of the Constitution. Okay. How CAG is different from CGA? So CGA. Yeah, Controller General of Accounts. Yes, sir. So I'm not aware about the difference, but the Controller and Auditor General audits the reports of the central government, the state government, and any other matter which is referred by the President to the CAG. And the Controller General of Accounts, I think it manages the accounts of the government as well as its undertakings. Okay. Is CGA a constitutional authority? No, sir. CGA is not a constitutional authority. Okay. I will give you a situation. Yes. Suppose I have a fund of 2 crore rupees after the retirement. So how will you advise me to use this fund so that I can enjoy my retirement, post-retirement life in a good manner? So post your retirement, you have 2 crore rupees. Yes. Like suppose a person who is retired at the age of 60, this person has a corpus of 2 crore rupees. Yes, sir. How this fund should be invested or managed so that it can be used properly? So firstly, the person can engage in the systematic investment plan as well as the systematic withdrawal plan, so that after a point of time they can withdraw a significant amount because of investing in a portfolio of market securities, which will diversify the risk as well as ensure better returns to them. Yes, sir. So I can think of this one. Okay. Now coming back to corporate governance. Yes, sir. Why so many lacunas? Like we see many problems at the level of auditors. Yes, sir. Auditors are not able to perform their role properly. So what can be the possible reasons that they are not performing their duty properly? So one of the reasons can be the conflict of interest on the part of the auditors. Second can be their nexus with the management of the organization, which compromises their independence. So third could be the lack of regulatory compliances on the part of auditors itself, and lack of integrity and due discipline on their part. So. Okay. Can you tell me exactly about conflict of interest? What is the meaning of conflict of interest? How it is impacting their work? So conflict of interest happens when the personal and the professional settings kind of integrate with each other, and there in a professional setting, the personal interest, it can be monetary or other, which comes into picture. So this is related to conflict of interest. Okay. Have you heard of NFRA? So the National Financial Reporting Authority. Yes. Recently, there was a conflict between NFRA and the auditing regulator ICAI. Okay, sir. Are you aware about what was the conflict about? No, sir. Sorry, I'm not aware about this. Okay.
Can you tell me few provisions about NFRA? Is it a statutory body or executive body? What is the role of NFRA? So I think it is an executive body established by the SEBI to investigate on the frauds that are committed in the financial institutions. So I can recall this only. Okay. Have you heard of GFR, General Financial Rules? No, sir. No. Have you heard of PFMS? Public Finance Management System. Yes, sir. yes. Can you explain what is the role of PFMS? So it is basically used for tracking of the funds which the government provides for various schemes of it. So the funds passes through the Public Finance Management System, so that to ensure that they are utilized for the purpose for which they are authorized, and thus helps in ensuring financial propriety on the part of the various government. Okay, fine. So you mentioned the word financial proprietary. Yes, sir. What is the meaning of proprietary audit? Proprietary audit. You would be aware CAG conducts various audits: performance audit, compliance sir. audit, Yes, sir. proprietary audit. In fact, can you tell me the difference between compliance audit, proprietary audit, and performance audit? So I'm not sure about the proprietary audit, but talking about the difference between the performance audit and the compliance audit. So in case of compliance audit, CAG assures that whether the rules and the regulations are followed or not. And in case of performance audit, it assures that whether the outcomes are achieved or not, and along with efficiency, so whether the funds have been utilized with proper efficiency to achieve those outcomes, and whether they are achieved or not. So these are the two major difference between performance and the compliance audit. Okay. Why CAG was in news recently? So CAG was in news related to the audit of the Delhi government's excise policy, as well as other departments of the Delhi government, such as the DTC running. So it was related to that. Okay. So you mentioned the word excise. Yes. What is the status of excise after the implementation of GST? Do we still impose excise duty, or now it is only GST? No, sir. The state government imposes the excise duty on products such as petrol, diesel, and the liquor. Okay. Should we bring these petroleum products under the GST? So I think yes, we should bring the petroleum products under the GST, because I think the benefits outweigh the concern. Talking about the benefits, sir, it will help in reducing the cost of products for the consumers, as well as it will also help in ensuring that input tax credit is available to the industries who use these petroleum products. Then what is stopping? What is stopping inclusion? So it is the concern of the state government, because a large part of revenue of the state government comes from excise duty that they imposed. So it is the reluctance of the state government, and their reluctance after their the compensation laws that they faced due to the implementation of the GST. But I think, sir, both of the central government and the state government should take a collaborative approach, because if petroleum is brought under the GST, then it will actually achieve the objective of uniformity of taxation and will benefit the consumers, industries. Okay, okay. Are you aware about the issue in the IndSInd Bank recently? No. IndSInd Bank. No, sir, I am not. Are you aware about that something happened there? It was in Sir, news. I have not read it. Yes. Okay, okay. Are you aware about what happened at Taurus Jewelry in the month of January 25? Something related to Ponzi scheme? So I think I have read it, but I am not able to recall right now. Okay.
Okay, fine. Yes, sir. In India, do government follow cash-based accounting or accrual-based accounting? So India currently follows the cash basis of accounting, but is planning to move towards the accrual basis of accounting because of certain benefits which we derive from the accrual basis. So why we have been following cash-based accounting so far? If accrual-based accounting is beneficial, why at all we adopted cash-based accounting initially? So because accrual basis of accounting is more complex than the cash basis of accounting, and usually the government tracks the sources of fund as well as the application of fund, so which can be easily done through the cash basis of accounting. But to ensure that there is more uniformity and comparability across government across the world, then I think the accrual basis of accounting should be adopted. So how accrual-based accounting will benefit? So firstly, as I talked about, that it will ensure uniformity with the governments of other countries, and will ensure that we can compare and point out the errors or the improvements where we can reform. Any visible benefit, any special benefit that you can talk about? So it will ensure that there is true and fair representation of the financial statement based on the transactions that occur during that particular period. How it will help it? How it will help the government? So because it will help in ensuring that the transactions when they are incurred are entered. So are you talking about accountability? Yes, sir. The proper maintenance of records as well as so in terms of comparability, uniformity, so these. Okay. What is the difference between convergence and adoption of accounting standards? Convergence and adoption. So I'm not very sure, but I would like to try. So adoption of accounting standards would be if as we have adopted the international financial reporting standards, and convergence would when our accounting standards align with the international standards. Okay, so in India, which model are we following? So currently we are shifting towards the Ind AS accounting. Right. Can you tell me two major differences between existing accounting standards and the Ind AS that we are now implementing? So presently I cannot recall, so okay. I will read about it. Why we are not adopting IFRS directly? Why we are choosing Ind AS? So I will read about it more, but I think it suits, it will be more suitable to the Indian accounting practices as well as the organizations, and therefore we are trying to even bring reforms into the international financial reporting standards. We have currently adopted the IFRS, but because we are shifting so that we can bring in more reforms and reduce the complexity and increase the understandability of the accounting. You are saying we are currently having IFRS? Yes, so we are shifting towards Ind AS. And currently we had earlier adopted IFRS. So. Are you sure? So, as per my understanding, I think yes, sir. Okay. What are the three major changes introduced by the new income tax bill? So firstly, it has reduced the content of the income tax bill by around 40%, thus reducing the burden of the complexities of the tax laws. Then there is better representation in terms of boxes, and for better representation and better understandability. So I can recall these two right now. Okay. What are the problems that we are still facing in the implementation of GST? So firstly, it is about the multiplicity of the tax rates that is there, which causes confusion as well as reluctance from the side of the consumers. Secondly, sir, it is the about the delay in the input tax credit, which compromises the working capital requirements of the businesses. Thirdly, sir, it is about the GST appellate tribunal, which was not constituted.
Other is, sir, about certain products outside GST, such as the petroleum and the liquor. And fourthly, sir, the fake invoices which are getting generated to take the benefit of the input tax credit. So these are the problems. Okay. Can you tell me the differences between marginal and absorption costing? Primarily the difference in the calculation of product cost between the two. So marginal costing only consider the product cost as relevant, as well as absorption costing considers both the product cost as well as period cost as relevant in terms of decision making. So in case of marginal costing, only variable costs are considered, and the costing is done to arrive at the price of the next unit of production, whereas the absorption costing considers the total cost of production. Yes, sir. Okay. Have you heard of presumptive taxation? Yes, sir. Can you tell me few areas where we use presumptive taxation in India? So it is used in case of professionals where we cannot ascertain the actual amount of income beforehand. So we assume it on, we make an assumption about their income. I think it is in case of so professionals like lawyers, doctors. Yes, sir. Can you tell me 3 developments in the financial markets in recent times? So firstly, it is about the increase in the disclosure norms for the FPIs by the SEBI. So then steps are taken by the SEBI for ensuring that conflict of interest part is decreased, and there should be increased transparency in the financial market. So the implementation of the T+0 cycle on pilot basis, which was done. So these are. Okay. Yes. Are you aware about pump and dump scheme? So I've heard about it, but I cannot recall. Not able to recall? Yes, sir. Okay. Have you heard of fund running? Fund running, sir? No, sir. Okay. In the motivation theories, which theory is your favorite theory? So I think it is the Herzberg's 2-factor theory, which is a development of the Maslow's hierarchy theory, which considered all the factors as motivational factors, whereas Herzberg differentiated between the motivating factors and the hygiene factors, and suggested an improvement in the approach of the management to motivate the employees. So, sir, it is a reformative approach which pushes to improve those aspects which will be able to generate motivation and thus enhance the productivity of the employees. So talking about the motivation factors, if they are present, they can act as a satisfying agent, but if they are not present, then there will be no satisfaction. And in case of hygiene factors, sir, if they are present, there will be no dissatisfaction, but if they are not present, then it will cause dissatisfaction. Yes, sir. So it kind of brought reformative approach towards the motivation theory, sir. Okay. Can you compare the leadership styles of current Prime Minister, the immediate past Prime Minister, and Shri Jawaharlal Nehru?
So as per my understanding, the current Prime Minister has a transformational leadership style, which provides a vision as well as is focused on the various needs, different needs of all the sections of the population. Whereas talking about our former Prime Minister Jawaharlal Nehru, he had a very charismatic style, a charismatic personality which drove the population of the nation towards him, and there was inner sense of persona in him, and people could relate more emotionally to him. Yes. Okay, so you told about Nehru ji, he was a charismatic personality. Yes. Modi ji, as more as a transformational leader. transformational, and Manmohan Singh ji, transactional. Okay, so I didn't talk about Manmohan. Okay. Okay, can you tell about him? Yes, so I can say that Mr. Former Prime Minister Manmohan Singh could be called as a transactional leader because he was an economist, and he definitely contributed greatly towards the economy of the country. By as a finance minister, he was able to implement the LPG policy. Later on, signing of the nuclear deal. Okay, what is the exact difference between transformational leader and transactional leader? So the transactional leader is more focused towards the operative goals and comes into picture only when there is some problem. So it is more of management by exception. Whereas in case of transformational leader, he is present throughout and focuses on the vision as well as the needs of the employees. So he is there to motivate the employees and adopts a more customization approach towards the leadership towards its employees, and is present throughout. Okay. Yes. So you would have gone to the public organizations and to the private organizations. Can you tell me two differences in the structure of a private company and a government department in the organizational structure? Okay, so I think there is more strict hierarchy in case of government organization, whereas there is less strict hierarchy in case of private organization, and there is more flexible work arrangement that is there in the private. Which one is better? So I think it depends on the sectors in which we are operating, whether we need more strict hierarchy or we need flexible arrangement. For example, if we need more innovation, then I think flexible arrangement works well. But if we are working in strategic sectors where the chain of command should be respected and rules should be followed, then I think, sir, the rigid hierarchy is better. Okay. Can you tell me 3 HRM policies of the government of India in the recent past? So firstly, I can think of is, so it has become more human centric, and Can you name a few initiatives of the government? Initiatives of the government. So the Karam Yogi initiative, in which they are focusing on skill development of the civil servants to make them future ready and even ready for the contemporary changes that are taking place. So secondly, the appointment of the 8th Finance Commission to ascertain the changes that are required in the salaries due to the inflation effect. So these two I can think of right now. Okay. Yes. So you mentioned about 8th Finance Commission. Yes, sir. Recently, government also announced UPS. Unified Last year, pension yes, scheme, Unified yes. Pension Scheme. How UPS is different from the existing NPS? Tell me 3 differences. So first difference is about the contribution aspect. In case of UPS, both the central government as well as the employee will contribute. Whereas in case of in case of the NPS system, it was, so I think I'm getting confused with the OPS. There also both the parties are contributing.
So there is an assured pension in case of the UPS for someone serving less than 10 years, the 10,000 amount which is assured. But in case of the NPS, it is based on the portfolio of investment and how the market will turn out. So there is no assured pension that is there. So I cannot think of others. Okay, fine. Can you tell me few news related to ILO in the recent past? So International Labour Organization. So last year there was an employment report which was released by the ILO, which talked about the level of skills of Indian personals and the wages that were growing in different sectors of the economy. So only I can think of this only. So okay. I will read about it. So. Okay. You would have heard about labor reforms in India. The Yes, four labor codes. Yes, sir. What is the status of implementation of these 4 labor codes? So currently the rules have been out for the 4 labor codes, but it is not implemented yet. Yes. Okay. Yes, sir. None of the code is implemented? So I think in the past few months there were only rules out, and the implementation is yet to take place regarding all the 4. Yes, sir. Okay. What is the definition of gig workers as per the relevant code, that is the IR code? So gig workers are those workers which share non-traditional employer relationship, and they engage in flexible employments, and there is no contract of employment that is there in case of gig workers. Okay. What is the difference between asset monetization and disinvestment? So disinvestment involves the outright sale of the government owning of an enterprise, whereas in case of asset monetization, sir, it is leased for a certain period for which an amount is received. So the basic difference is that in case of disinvestment, the government transfers ownership, but in case of asset monetization, there is no transfer of ownership. There is no transfer of ownership. So it is purely rental, kind of giving the property on lease. So there is also a provision where certain properties of the government which are of no use, it can also be sold, but mostly it is about leasing of the assets. So that there is better utilization of the assets. What are the benefits of digital rupee, e-rupee, CBDC, yes, sir, over the physical currency that we have right now? So firstly, it will help in achieving more digital economy and increasing more transactions with legal government backing. Secondly, sir, it will also reduce the signorage cost of printing money, as it will act as a substitute of money. And thirdly, sir, it also enjoys that the lack of volatility which other digital currency faces, which is not backed by the government. So, these are the benefits. Yes. Have you heard of effective revenue deficit? Effective revenue deficit, yes, sir. Okay. Can you please explain? Yes, sir. So it is the revenue deficit minus the funds provided by the central government to the state government for capital expenditure. So it is revenue deficit minus the capital expenditure of both the central as well as the state government. Both the center also? Are you sure? So no, sir. It is only the state government, because otherwise it will right. Yes. Okay, fine. Who prepares the balance of payment
So I think it is the Department of Revenue under the Finance Ministry. And what is the definition of resident in the balance of payment? So, sorry, sir. Definition of resident. Resilient. Resident. 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 Resident, sir. So resident can be termed as an individual who is living in India for more than 182 days. That is income tax definition. Okay, sir. I'm talking about Yes, for the purpose of balance of payment. Okay, Is sir. it same or different? So I'm not aware about this. I'll read. Yes, Okay. sir. Do you prepare balance of payment statement on cash basis or accrual basis? So I think it is cash basis. Are you sure? So I will check it. So I'll. Okay. Have you heard of off-budget liabilities? Yes, sir. Can you give some example? So, for example, the loans taken by the public sector undertakings on behalf of the government, for which the government guarantees loan repayment. But Okay. these are outside the physical deficit of the government. Okay. There is also, there is one more example, that is oil bonds. Oil- Have you heard of oil bonds? Yes, sir. I have. Is it off-budget liability or not? So I'm not sure if it is, but yeah, if I have to take a guess, then I think it please. is a part of Off-budget. Yes, sir. What is the mechanism of oil bonds? So I think it is similar to other bonds which are issued to the public or the investors as a debt, but the usage of it is for the oil producing companies or those organizations which are engaged in oil industries. Okay. What is NEER and REER? NERE? And near and rear. Near and rear. Yes, sir. So nominal effective exchange rate and real effective exchange rate. Okay. Tell me one thing. If near is increasing, Yes, sir. does it mean rupee is appreciating or rupee is depreciating? So the need does not account for the inflation aspect. So I cannot be sure whether it is appreciating or depreciating, but if I have to take a guess, then so Please. it is depreciating Okay. because it also accounts for the inflation in the exchange rate. So, but I'll read about it more to get clarity. Yes, sir. How will the AI will impact finance profession? So I think AI can impact in a positive manner in the finance profession because of the better analysis it can provide by using large data sets. So it can help in analyzing patterns and trends which are there, as well as identifying options that are there for multiple investments. It can help in identifying and anticipating the risk involved in certain in financial instruments. So I think AI can be beneficial in that aspect, but so we have to be careful about the AI in usage in the financial sector because it can also make errors. So we have to be mindful about that, but I think it will impact in a positive manner. Okay. Who regulates Gift City? So, Who regulates Gift City? so I think it is IFSCA, the International Financial Services. Right. Whether SEBI, RBI, IRDA, these are also regulating in Gift City or not? No, sir, I don't think that these are the regulators. It is the IFSCA which Is it single regulator for all the markets? Or we have different regulators for different markets? So we have different regulators for different markets. In Gift City? No, sir.
I think the overall regulation is taken care of by the IFSCA in GIFT City. Okay. What is the benefit of GIFT City? So firstly, it will help in integration of the Indian market with the financial market of other countries in the world. So secondly, it is also engaging in other sectors such as education by collaborating with international universities such as 2 universities of Australia are being set up in the GIFT City. So it is also creating a market for the gold bullion. Yes, sir. Okay. Have you heard of digital public infrastructure? Yes, sir. How many components it has? So components. So in terms of, can you? Yeah, like for example, one of the component is Aadhaar. Okay, sir. Second component, third. UPI. So Yes. then in terms of agriculture, there is ENAM and various other agri-stack portals. So. Okay. What is the meaning of account aggregator? So the account aggregate helps in providing a one-stop platform for managing all the transactions and accounts that are there to a second party, so that there is better efficiency in the financial transactions as well in managing the various accounts of a entity. So Can you please explain a bit more? So for example, we have different accounts across or we have investments in various other stocks. So it kinds of act as a unifying a single platform where all our information is there, and thus it will help in increasing the efficiency of transactions as well as providing one-stop platform where all our information is there. So. Okay. Have you heard of safe harbor rules? Yes, sir. Okay. Why government is, I'm changing the topic now. Yes, sir. Have you heard of sovereign gold bond? Yes, sir. What is the recent development about sovereign gold bond? There was some news that government is planning to discontinue this. Yes, sir. So, and also there is one more news about gold monetization scheme today. Okay. Have you seen that news? So I have not read the newspaper of today. Okay, okay. But these were the schemes of the government which have been running for last quite a few years. Yes, sir. Why government is discontinuing sovereign gold bond and gold monetization scheme? So I think because the government has not been able to achieve its target in reducing the physical gold that is there in the hands of the people. So the initial objective of bringing such scheme was to reduce the physical golds in the hand of people and use this idle gold, usage of this idle gold by the government to maintain the reserves and to ensure that the trade deficit is less. Yes, sir. Okay. Okay, fine. Fine. ठीक है जी, done. Okay, your button. आपका डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है? 3rd April, sir. 1 week. 3rd April, 1 April. ओके. आपने अभी कितनी प्रिपरेशन की है वैसे कॉमर्स में? मतलब जो टॉपिक्स मैंने आज पूछे थे आपसे, वो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं या पार्शियली किए हैं या बिल्कुल भी नहीं किए? सर मैंने अपने नोट्स से ही एक बार निकली हूँ. अपने नोट्स आपने कब बनाए थे? वही मेंस वाले नोट्स है सर, तो थोड़ा इतना अच्छे से नहीं होता है ये चीजें कि वो स्पेसिफिक टू मेंस होता है. तो ये सारे थोड़ा बहुत उतना ठीक है. तभी तो मेरे हिसाब से भी यू शुड डिवोट सम टाइम, एटलीस्ट 1 or 2 days फॉर दिस. एक्चुअली यू नेवर नो कि आपका बोर्ड हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना पूछे कॉमर्स में. अभी मुस्कान आर्या, जानते हैं आप मुस्कान आर्या को? मुस्कान, हर इंटरव्यू वाज लास्ट वीक. ओके.
अच्छा, उनका हो गया है? उनका हो गया है, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो शी इज ऑल्सो कॉमर्स, ग्रेजुएट इन कॉमर्स, एंड इनिशियली शी वाज वेरी हेजिटेंट कि सर कॉमर्स में क्या प्रिपेयर करें, क्वेश्चन तो पूछते नहीं है। यस सर। देन आई इंसिस्टेड हर कि नहीं, आप प्रिपेयर करके जाओ, यू नेवर नो। यस सर। तो 5 में से 3 मेंबर ने कॉमर्स वाले क्वेश्चंस पूछे। अच्छा। मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर दूंगा उनकी। Yes, sir. और बोर्ड कौन था सर? बोर्ड, एक मिनट, बोर्ड का तो मुझे देखना पड़ेगा। उसका एक रीजन ये भी था कि उन्होंने पीजी में सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए थे, कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए हुए थे, तो वो सब्जेक्ट से उन्होंने पिकअप कर लिया। मैंने भी करे हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने ज्यादा नहीं किया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रखा है, और शायद एचआरएम या ओबी, बस ये है। हाँ, तो उन्होंने उसी से संबंधित, जैसे उनके उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, ऑडिटिंग था, तो उसी पे क्वेश्चंस पूछ लिए। तो चेयरपर्सन ने क्वेश्चन पूछे थे इन्वेस्टमेंट से संबंधित, फिर मेंबर 2 ने भी टच किया, मेंबर 3 ने भी टच किया, और लास्ट वाले मेंबर ने भी टच किया। मैं आपको शेयर कर देता। सुमन मैम का बोर्ड था। सुमन मैम, वो तो आईआरएस है। वो आईआरएस है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ सुमन मैम काफी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। संजय वर्मा सर ले रहे हैं। हाँ, अभी इस वाले हफ्ते में तो दासा सर नहीं है, राज शुक्ला सर है, और इस वाले हफ्ते में कॉमर्स वालों के हो रहे हैं क्या? कॉमर्स वालों के पता नहीं। हाँ, नहीं हो रहे। आपका 3 अप्रैल को है ना? 3 अप्रैल है। हाँ, तो सुमन मैम वैसे भी रैंडम पूछती है काफी, मतलब जो काइंड ऑफ नॉलेज टेस्ट कर रही होती है। सुमन मैम का इससे पहले ईशांक मित्तल का था। ईशांक मित्तल को जानते हो आप? नो सर। नहीं, उनसे भी कॉमर्स वाले क्वेश्चन कुछ पूछे थे। वो आईआरएस मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए उनकी। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। अभी उनका इंटरव्यू था अंजलि गुप्ता, जानते हो आप अंजलि गुप्ता को? सीए हैं वो। हाँ, इन्होंने भी 2-3 हाँ इंटरव्यू दे चुके हैं, पहले 2 बार दे चुके हैं, 3rd इंटरव्यू था शायद इस बार। तो अंजलि गुप्ता से भी सीएजी वाले क्वेश्चन पूछे थे। तो हाँ, वो मैंने मॉक में उनको तैयार करा दिए थे। तो अभी जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो आपको सारे तैयार करने हैं। यस सर, वो हाँ, मुझे अभी फील हो रहा है कि आपकी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है इसमें, फैक्चुअल थोड़ा सा करना है आपको, ठीक है? तो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे वो मैंने सब आपको वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा तो मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा, जो मैं लिखे हुए मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब इस पे कंटेंट के लिए मैं आपको शेयर कर दूंगा कुछ सुझाव ने चीजें कंपाइल की थी मैंने, उसमें से कुछ चीजें निकाली हैं, मतलब रिफाइन करके ना, वो मैंने आपको दे दूंगा। मैं सुझावल की बहुत बड़ी फाइल थी, लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो फिर उसमें से कुछ चीजें मैंने निकाली है, ठीक है? दूसरा, एक माधव अग्रवाल की वीडियो है, उसमें से कुछ चीजें देख लेना, लास्ट ईयर की है, वो आपके पास है? इंटरव्यू की या फिर जैसे इंटरव्यू है आपके पास? नहीं मेरे साथ। मैं शेयर कर देता हूँ। तो कुछ इश्यूज पे माधव ने ओपिनियन बताई हुई है, वहां से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां पर मैंने काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर खुद एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक मुस्कान को मैंने पूरा एक्सप्लेन किए थे, ये सारे टॉपिक्स, काफी सारे टॉपिक उसमें से एक्सप्लेन किए, तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी मैंने। तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। और मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूं अभी। आपके सर्कल में कौन है अभी जो मतलब इंटरव्यू जिसने रिसेंटली दे दिया हो? कुछ नाम बताइए मुझे। कॉमर्स से अभी कोई नहीं है, क्योंकि मैं अभी माधव और उनसे भी वो अपनी सर्विस में उतना कनेक्टेड नहीं है, तो कॉमर्स से तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, कॉमर्स से कोई नहीं है। ओके, अंजलि गुप्ता से मैं बात करता हूँ, वो आपको हेल्प कर सके तो, मतलब यू नीड द हेल्प ऑफ सम कॉमर्स पर्सन जिसने इंटरव्यू दे दिया हो। यस सर, उनका थोड़ा प्रिपेयर्ड भी होगा। वो क्या है ना कि आप खुद से रिसर्च करोगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पढ़ तो लोगे आप, एक पढ़ लेना जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको कोई चाहिए कि जो आपके साथ बैठ के थोड़ा 2 घंटे पूरा ब्रीफ कर सके। तो वो काम मैं भी कर सकता हूँ, मतलब पहले मैं कंटेंट दूंगा, पहले वो पढ़ लीजिएगा आप खुद से, फिर अगर कोई मिल जाता है आपको जिसने रिसेंटली इंटरव्यू दिया हो, अदरवाइज आई विल सिट विद यू। तो हम गूगल जूम पे मीटिंग पे कर लेंगे, या फिर आप आ जाना किसी दिन, तो मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा इश्यूज को। मतलब ये है कि प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है।
कंटेंट में शेयर कर देता हूँ आपको ना, बट हाँ 2 दिन आपको चाहिए मैक्सिमम, 2 दिन चाहिए थोड़ा सा शार्पनेस आने में आंसर्स। यस, शार्पनेस। जैसे इंसेंट बैंक वाला तो आपको पता होना चाहिए था, न्यूज में था। थोड़ा न्यूज़पेपर इधर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे आजकल? नहीं पढ़ रही हूँ आजकल तो इतना अच्छा न्यूज आ रही है ना। आज का इंडियन एक्सप्रेस देखा? आज वाला नहीं पढ़ा है, मतलब वो अभी ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस देखा है? आप देखना आज का इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी वाला पेज। अच्छा, पूरी एक एक न्यूज जो है ना इंपॉर्टेंट है। ओके सर। माधव का सेशन में शेयर कर देता हूं आपको। आप तो वैसे अदर एरिया सब प्रिपेयर्ड ही होंगे अब तो, मतलब। हाँ सर, अभी मतलब वो सब सही जा रहा है अभी। हाँ, तो बस कॉमर्स का ही मेरा थोड़ा वो ही हो जाता है ना, छूटता जाता है। हाँ। थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा बहुत। अभी आज था तो मैंने पूरा बैठ के स्पेसिफिकली थोड़ा सा ब्रश अप किया, पर वही जल्दी जल्दी में सब। बाकी आपका टेम्परामेंट वगैरह वो तो सब ठीक है, मतलब इंटरव्यू वाली जो स्किल्स हैं वो सब आपकी ठीक है। और कुछ न्यूज वगैरह आप अच्छे से फॉलो करना। NFRA एंड ऑल में आपको काफी कंटेंट शेयर करता हूँ, है ना। yes. बंद कर दो। ओके, मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ ना। अभी रुक जाओ। गूगल टैक्स वाला थोड़ा पढ़ लेना आप, वो आज न्यूज में था। CAG में टाइप्स ऑफ ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है कि एक आप कोई भी जो खर्चा करते हो तो यू आर स्पेंडिंग एज इफ इट इज योर ओन मनी। ओके सर। तो मैं वो रिलेट तो कर रही थी प्रोप्राइटर से, लेकिन मैंने बोला मुझे पढ़ा नहीं है, तो फिर मैं हाँ वो ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉड्स मैंने आपसे पूछे थे। हाँ, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो ये था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जो शेयर होल्डर हैं वही ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। यस सर। और फिर उन्हीं की कंपनी के बारे में ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, इंटरनल ऑडिटर। हाँ, तो अगर ऑडिटर ने कोई कमी पकड़ी तो फिर वो रिपोर्ट करने में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसको आगे फिर ऑडिट अपॉइंट नहीं होगा वो। NFRA स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ओके सर। NFRA जो कंपनीज एक्ट में है ये। तो इसके बारे में डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा, है ना। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में हम सबसे बड़ा जो विजिबल बेनिफिट होगा ना, वो है कि PPP में हमारे लिए और आसान हो जाएगा एग्रीमेंट्स करना। और गवर्नमेंट को अगर फॉरेन से लोन रेज करना होगा तो वो भी आसान हो जाएगा। ये है मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट है। प्राइवेट तो अप्रूवल ही फॉलो करता है। हाँ, यस, तो वो है ना। अच्छा, हम लोग करंटली IFRS फॉलो नहीं कर रहे अभी। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारी जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं पहले वाले, वो है हमारे पास। IFRS को पूरा कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं ना कुछ, उनके लिए जो IFRS है उसको चेंज करके हम इंडिया में इंडियस की तरह यूज कर रहे हैं। तो IFRS करंटली यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, टोरस ज्वेलरी वाला वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कुछ। ये तो थोड़ा पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा था। टोरस ज्वेलरी में कुछ स्कैम वैसा हुआ था कि वो ज्वेलरी के नाम पे पैसे इकट्ठा कर रहे थे। और बाद में वो किसी CA ने वो विसल ब्लोइंग की उसकी, बाद में वो पर्दाफाश हुआ उसका। मोटिवेशन वाला ठीक था आपका। अच्छा, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी ठीक था वैसे। आपका जो सेकंड वाला पॉइंट था, थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ लेना। कॉम्पेंडम स्कीम, वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो प्राइस को बढ़ा देते हैं, किसी शेयर के बारे में न्यूज फैला देते हैं और फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है, और जब वो प्राइस बढ़ जाता है तो उसको सेल कर देते हैं। अच्छा, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान हो जाता है। मतलब ऑपोजिट टू शॉर्ट सेलिंग, वही जैसा उसमें क्या होता है कि डिक्रीज प्राइस पे। हाँ, लेकिन वो जो शॉर्ट सेलिंग है दैट इज अबाउट नॉट हैविंग द शेयर्स स्टिल। हाँ, वो बोरो करके देन उसके डिक्रीज प्राइस पे वो वापस खरीदते हैं। हाँ, वो थोड़ा हल्का सा डिफरेंट है, मतलब काइंड ऑफ ऑपोजिट सा, थोड़ा सा।
और फ्रंट रनिंग में क्या होता है कि जो मैं सपोज मैं ब्रोकर हूं, आप मेरे क्लाइंट हो। यस सर। अब मुझे पता है कि आपने मुझे कुछ ऑर्डर दिया कि राहुल जी 5 करोड़ मेरे शेयर खरीद लो मेरे नाम पे। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि 5 करोड़ शेयर मैं आपके खरीदूंगा, तुरंत शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ। मुझे पता है कि भाई बहुत बड़ा वो है, मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर है ये, तो इसकी वजह से प्राइस शूट कर जाएगा। यस। तो आपके ऑर्डर लगाने से पहले मैं अपना कोई बाइंग कर लूंगा अभी, क्योंकि रेट तो कम है अभी तो। अच्छा, उससे पहले आप बाय कर। हाँ, आपने मुझे ऑर्डर किया, मैं आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले मैं खुद बाइंग कर लूंगा और प्राइस सस्ते प्राइस बाय कर लूंगा। फिर आप से जब बाय करूंगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर मैं अपने वाले शेयर कर दूंगा। तो वो फ्रंट रनिंग होती है। फ्रंट रनिंग नॉर्मली ब्रोकर्स करते हैं। हाँ, और एचआरएम वाला ठीक था। आईएलओ का थोड़ा देख लेना करंट अफेयर्स, बाकी ओपीएस एनपीएस यूपीएस वो आप थोड़ा देख लेना। लेबर कोड्स अभी सारे इंप्लीमेंट नहीं हुए, एक दो हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा हुआ है। रूल्स आए थे सर 2-3 महीने पहले की। हाँ, मतलब इतने टाइम से तो रूल्स भी नहीं आए थे। हाँ, रूल्स आए। हाँ, वो थोड़ा देख लेना एक बार। बाकी डिजिटल रूपी ठीक था आपका। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बाद में ठीक हो गया था, वो स्टेट वाला हटा के। बीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। और यहाँ पे जो रेजिडेंट की डेफिनेशन होती है वो होती है 1 ईयर ऑफ स्टे प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया। कोई इंसान अगर इंडिया में 1 साल से ज्यादा रहता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो यहाँ पर इनकम टैक्स से थोड़ी डिफरेंट होती है। ऑयल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं। सपोज मैं ऑयल कंपनी हूं, आप गवर्नमेंट हो। अब आपके कहने से मैंने सब्सिडी दे दी, यानी कि मैंने अपने ऑयल को सस्ते में बेच दिया। मुझे लॉस हो गया। अब आपके कहने से मैंने वो लॉस किया है, तो आप मुझे कैश दोगे, नॉर्मली तो ये होना चाहिए। लेकिन आप मुझे कैश दोगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, आपको बोरो करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए आप कहते हो कि ऐसा करते हैं कि मैं आपको बॉन्ड इश्यू कर देता हूं, आप मुझे बॉन्ड इश्यू करती हो। आप गवर्नमेंट हो, मैं पीएसयू हूं, ऑयल कंपनी हूं। आप मुझे बॉन्ड इश्यू करते हो और आप बाद में उसको रीपे करते हो, मे बी 10 साल 20 साल बाद। सर, मैं आपको बॉन्ड इश्यू करूंगी तो मैं तो आपसे पैसे लूंगी ऑयल कंपनी से। अगर सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा हो गया। मतलब आप कहते हो कि राहुल जी मुझे बॉन्ड इश्यू कर दो, मैं आपको बॉन्ड इश्यू कर देता हूं और बाद में फिर उसको आप फ्यूचर में रीपे करोगे। ठीक है सर। ठीक है। नहीं, बॉन्ड जो मैं बोल रहा था पहले वही होगा। आप मुझे बॉन्ड इशू करोगे, गवर्नमेंट इशू करेगी बॉन्ड, आप बॉन्ड इशू करोगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, आप मुझे बॉन्ड इशू करोगे, ठीक है। जब आप मुझे बॉन्ड इशू करोगे तो उस टाइम पे मुझे आपको पैसे देने चाहिए। लेकिन वो पैसे ना दे करके ऑलरेडी जो सब्सिडी मैंने आपकी गवर्नमेंट दी है वो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन बाद में फिर आप मुझे बॉन्ड को रीपे करोगे। ठीक है। तो जो पहले वाला स्टेटमेंट था मेरा वही ठीक है ना। और नीर और रीर यहाँ पर उल्टा होता है एक्चुअली। मतलब जैसे एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो रुपी डेप्रिशिएट होता है। अगर रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है यानी कि 85 से 90 पे चला गया तो रुपी डेप्रिशिएट होता है। लेकिन नीर वाले केस में ऐसा नहीं होता। नीर वाले केस में कंफ्यूजिंग है। हाँ, के टाइम पे मुझे पता था वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं जानबूझ के वही पूछ रहा हूँ जहाँ पे कंफ्यूजन होता है नॉर्मली। तो नीर वाले केस में क्या होता है ना, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि वहां पर अगर नीर बढ़ेगा तो रुपी अप्रिशिएट होता है। उसका लॉजिक भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट दैट विल बी वेरी लॉन्ग। सिंपल ये समझ लो, मैं पढ़ लूंगी सर, थोड़ा पढ़ लेना। वो एक बार करूंगी तो हो जाए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। हाँ सर, वो हर बार प्रीलिम्स से पहले ही करना पड़ता था 10 दिन ताकि वो याद रहे। बस आप रट लो कि नॉर्मल वाले केस में एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब रुपी डेप्रिशिएट होता है, यहाँ पर उल्टा होता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है। गिफ्ट सिटी का आपका आंसर ठीक था। अकाउंट एग्रीगेटर थोड़ा सा देख लेना, फिर भी थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए। हाँ, और ठीक है। बाकी तो हाँ, बाकी काफी सारे इश्यूज हैं जहां पर थोड़ा सा और क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। जीएसटी में क्या इश्यूज हैं आपने सही बताया वैसे, लेकिन थोड़ा सा और आईएफआरएस इंडियस पे और इंडसइंड बैंक वाला इशू हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा सा और अच्छे से करने की जरूरत है। सीएजी को अच्छे से करने की जरूरत है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वाला जो पॉइंट था ना कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, जो मैंने आपको बोला था कि 2 करोड़ का फंड है, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट की जरूरत है। उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि बिकॉज वो रिटायर्ड है तो उनको उनकी नीड हो सकती है, एक तो रेगुलर इनकम की, दूसरा उनकी नीड होगी मेडिकल
फैसिलिटीज के लिए। थर्ड, हो सकता है कि उनको हाउसिंग नीड भी हो। तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वेदर द पर्सन हैज द हाउस और नॉट, मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है। तो पहले तो इनके लिए कुछ किया जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट उनके लिए 6 मंथ के लिए दे शुड कीप द मनी इन एफडी। 6 मंथ के जो खर्चे हैं उसके बराबर पैसा उनके एफडी में होना चाहिए, या फिर हाईली लिक्विड बॉन्ड्स में पड़ा होना चाहिए एज ए इमरजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड। और लास्ट में फिर बाकी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में, और अगर फिर भी एक्स्ट्रा पैसा है अगर, तो फिर इसको इक्विटी में लगा सकते हैं। लास्ट और इक्विटी की जगह पे बेटर होगा म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में। ठीक है सर। तो इस तरह से मतलब आपका अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें मतलब गोल्डन रोल भी यूज कर सकते हैं इन केस द पर्सन इज हैविंग इंटरेस्ट, मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट। और इसके अलावा आप एक चीज और कर लेना, टैक्सेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स, कि उनके संबंधित हाँ स्लैब अलग होता है उनका, एडवांस टैक्स प्रोविजन क्या होते हैं, टीडीएस प्रोविजन क्या होते हैं उनके, क्योंकि वो मेंबर जो है ना कई बार अपने बारे में भी पूछ लेते हैं वो अपने जानकारी के लिए। तो इट इज गुड कि आप उनको फ्री में कंसल्टेंसी दे दो। उनको फ्री में कंसल्टेंसी चाहिए होती है, मतलब काइंड ऑफ। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा मैं कर जाऊंगी। वैसे मैंने टैक्सेशन का ही मेंशन नहीं किया है। हाँ, जैसे अपने सब्जेक्ट्स में। हाँ ठीक है। हाँ, तो लेकिन जो मेंशन किया उसको अच्छे से, हाँ जो मेंशन किया उसको अच्छे से ये मैं कर लूंगी सर। हाँ, ज्यादा मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी। हाँ ज्यादा मैं आपको रिसोर्स शेयर कर दूंगा, आप वो देख लेना बस। हाँ, जो इश्यूज मुझे लगता है कि रेलिवेंट हैं, मोस्टली इसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं। यस सर। एक मैं आपको ईमेल आईडी आप मुझे दो, मैं ताकि आपको शेयर कर दूं, अदरवाइज बाद में क्या होता है वो फिर चीजें हो नहीं पाती।